Good morning, students. Today's class is for BBA third year finance student, and today we'll discuss the subject security analysis and portfolio management or Sapm, and the code is 3.3. The students, in the last class we have discussed the meaning of securities and different types of securities, which includes shares, stocks, debentures, bonds, mutual funds and other security. So after getting an idea regarding the various types of securities, in today's class we will move towards one of the important aspect of securities market, that is investment. So today we will discuss the concept and the meaning of investment. So let's start. What is investment or the meaning? Meaning of investment. The students, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझने से पहले थोड़ा जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कौन करता है, कहाँ करता है। ये सब चीजें समझने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट के रियल मीनिंग की तरफ जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मेड बाय वन इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मेड बाय वन इन्वेस्टर। Investor means the person who makes the investment. Very simple. Investor means the person who makes the investment. The person who makes the investment is known as the investor. Suppose Mr. X is having rupees 1 lakh and he wants to invest in any particular securities. So Mr. X will be the investor. Similarly, Mr. Y, Mr. Z, they may be the individual investors. Just like the human beings, one company can also be the investor. For example, XYZ Limited wants to invest in ABC Limited. MNC Limited wants to invest in PQR Limited. So the investor may be one company or one partnership firm. XYZ partnership firm wants to invest in another partnership firm or in another company. So partnership firm may be the investor. So the investor may be individual human beings. It may be partnership firms. It may be the companies. So this is the meaning of investor. The person who makes the investment will be called as the investor. Now the question is, where the investors
or from what source the investors invest, or where does the investment arise. इन्वेस्टमेंट कहां से आता है वो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं. Where does the investment arise? Dear students, remember, investment always arises out of the savings. Investment always arises out of the savings. Now, in our society, individuals or households save and the companies always invest. It's the household are the savers. The household or the individual common man are the savers. Now, suppose one individual, say Mr. X, is earning 30,000 per month. 30,000 रुपया मिस्टर एक्स एक महीने में कमा लेता है. Do you think after earning 30,000 rupees per month, Mr. X will make his or her expenses beyond 30,000? No, because Mr. X is earning a limit of 30,000. So his consumption or his expenditure will be definitely less than 30,000. Yes or no? So suppose Mr. X का कंजप्शन या एक्सपेंडिचर बन रहा है 20,000 रुपए, 20,000. सो मिस्टर एक्स का इनकम हो गया 30,000 और उसका एक्सपेंडिचर हो गया 20,000, 20,000. तो डेफिनेटली सेविंग्स विल बी 30,000 minus 20,000, that is income minus expenditure. 30,000 minus 20,000 equals to rupees 10,000. So rupees 10,000 will be the amount of savings that Mr. X saves every month. Suppose after 1 year, 10,000 multiplied by 12 equals to 1,20,000. So rupees 1,20,000 will be the savings of Mr. X in one financial year. Now Mr. X can think for investment. Getting the point? Now Mr. X can think about for making the investment because he has the savings of 1,20,000. That's why from the very beginning I am saying that investment always arises out of savings. On the other hand, take the example of Mr. Y, another individual. Suppose Mr. Y earns 15,000 per month and his expenditure is almost near to 15,000 or say 14,000 or 13,000 or near to 15,000. So Mr. Y का इनकम जितना हो रहा है एक्सपेंडिचर लगभग उतना ही बन रहा है. 15,000 वो कमा रहा है, 15,000 तक वो खर्च भी कर लेता है. Now his savings will be 0 or say 500 to 1,000, which is again very negligible amount. So on yearly basis his savings will be suppose 500 on an approximate basis per month. So 500 rupees multiplied with 12 equals to 6,000 rupees. So 5 to 6,000 rupees is Mr. Y's investment. Savings.
Now Mr. Y cannot think for investment because he has not sufficient money to invest, or near about 4,000, 5,000 is not a huge amount that Mr. Y will think let's go for one investment plan. Only when we save a huge amount of money, then only we can think for the investment opportunities. So Mr. X, again coming to the first example, Mr. X saves rupees 10,000 per month. So on a yearly basis, 10,000 multiplied by 12 equals to 1,20,000 will be the amount of savings. So now Mr. X can think about for making the investment. So dear students, always remember, savings arise out of the income and taking into consideration the expenditure. So we can say savings equal to income minus expenditure. 30,000 minus 20,000 equals to 10,000. So rupees 10,000 will be the savings. So savings are always made out of the balance or after deducting the expenditure from the income. इतना समझ गए? थोड़ा और कंसेप्ट जानते हैं. Now, every individual saves money out of the sacrifice. Remember the sentence, very important. Savings are always made out of the sacrifice. Savings जब हम sacrifice करते हैं तभी savings का concept आता है. मिस्टर X का जो एग्जाम्पल लिए थे वहां भी मिस्टर X 10,000 रुपए महीने में वो sacrifice कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए. So savings are always directed और always arise out of the sacrifice. इतना हो गया. अब हम इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझेंगे. ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टमेंट का. अब रियल मीनिंग क्या है इन्वेस्टमेंट का वो हम लोग समझेंगे या जानेंगे. इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स in order to make profit. Investment is the employment of funds in order to make the profits. So we can also say investment is one of the economic activity. Why? Because any investment is always directed towards earning of profits and profits only. So we can categorize the investment under economic activities. Now, in
other terms or in general sense we can also say investment is the use of money to earn more money. Investment is the use of money in order to make or in order to generate more money in the future. इन्वेस्टमेंट का और एक मीनिंग भी है यूज ऑफ मनी इन ऑर्डर टू जनरेट एक्स्ट्रा मनी इन द फ्यूचर। जहां सेविंग्स की हम लोग बात कर रहे थे, सेविंग्स का मतलब क्या था? सेविंग्स मतलब इट इज नथिंग बट द सैक्रिफाइस मेड बाय द हाउसहोल्ड्स और इंडिविजुअल्स टू अर्न सम मोर मनी इन द फ्यूचर। So just like that, investment is always directed towards using of the existing money, that is the savings or that is our savings, in order to make some more money in the future. हम कहीं पे भी पैसा क्यों लगाएंगे? बहुत ही आसान आंसर है, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए, थोड़ा ज्यादा रिटर्न पाने के लिए, थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। So it is always that make use of money. Let's take one or different examples of investment. In a business, the businessman invest in the form of capital. In a business, money is always invested by the businessman in the form of capital. तो बिजनेस के अंदर कैपिटल जो है वही इन्वेस्टमेंट होता है। और हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में? In order to make profit. In order to make प्रॉफिट। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सपोज हमारा एक हाउस है और एक से भी ज्यादा हाउस है, तो हम उसको रेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग हाउस खरीद के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी हम रेंट पाएंगे। अगेन दैट विल गिव अस प्रॉफिट। अगेन दैट विल गिव अस प्रॉफिट। थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। बैंक में हम लोग चले गए एफडी करने के लिए, तो वहां पे भी हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। Again, we are earning profit. Dear students, if you have a close look on the different three examples, that is business, house and bank or FD plans, the end result is profit. The end result is यहाँ पे भी प्रॉफिट, बिजनेस में भी प्रॉफिट, हाउस में भी प्रॉफिट, बैंक में भी प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट एक वर्ड तीन चीजों में या तीनों इन्वेस्टमेंट प्लान में वो कॉमन है, चाहे बिजनेस हो, चाहे हाउस हो, या चाहे बैंक हो, या एफडी का प्लान हो, फिक्स्ड डिपॉजिट का प्लान हो। एक चीज वो कॉमन है, वो है प्रॉफिट। इससे हम लोग समझ गए कि एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स ओनली। If the concept of profit is not there, then nobody wants to invest in any organization. भाई हमें अगर इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही क्यों, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑल द इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। So from the three example you can easily able to understand that any investment activities is always or are always directed towards earning of profits only. Fine. So this is the meaning of investment. थोड़ा इसे हटा देता हूँ। After knowing the meaning of investment, let's move to the second aspect that is very important, objectives of investment. हम लोग अब क्या पढ़े, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Objectives of investment. Dear students, the objectives of investment is broadly be classified into two categories. Number one, main objectives, and number two, subsidiary objectives. एक चार्ट बना लेता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, इतना समझ लिए। अब मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर अगेन दो फर्दर सब क्लासिफिकेशंस हैं। पहला वाला है मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। दूसरा वाला है मिनिमाइजिंग द रिस्क। मिनिमाइजिंग द रिस्क। तो मेन ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट, दो सब क्लासिफिकेशन है। देयर आर टू सब क्लासिफिकेशंस ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। First is maximizing the return, second is minimizing the risk. Let's move to the second part, that is subsidiary objectives. Subsidiary objective के 4 या 5 अगेन सब क्लासिफिकेशंस है। क्या है वो?
So these are the 5 sub classifications of subsidiary objectives of investment. Number 1, liquidity. Number 2, capital appreciation. Number 3, safety of the funds. Number 4, hedging the risk. And number 5, tax consideration. So ये चार्ट को थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं. Objectives of investment are of 2 types: main objectives and subsidiary objectives. Main objectives again are of 2 types: maximizing the return, minimizing the risk. Then subsidiary objectives के 5 सब क्लासिफिकेशन है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया. तो अब थोड़ा जानेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इसे हटा देता हूं. Now the main objectives. डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1 पे चला आता हूँ. वहां पे तो चार्ट बना लिया था, अब सीधा पॉइंट नंबर 1 पे चला आता हूँ. मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न. स्टूडेंट्स, रिटर्न जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, रिटर्न जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिटर्न इज नथिंग बट द प्रॉफिट. वो एग्जाम्पल को याद करो, जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिया था, बिजनेस का, दूसरा वाला था क्या था, हाउस का, तीसरा वाला था बैंक का, एफडी प्लान का. तीनों चीजों में क्या कॉमन था? प्रॉफिट. एंड रिजल्ट क्या था वहां पे? प्रॉफिट. अभी बताया मैंने आप लोगों को. तो जो प्रॉफिट था ना, वही या उसको ही हम रिटर्न कहते हैं. रिटर्न का कोई ऐसा अलग मतलब नहीं है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना. रिटर्न का मतलब इज नथिंग बट द प्रॉफिट और द एंड रिजल्ट ऑफ द व्हाट इन्वेस्टमेंट्स. सो मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न. सी what we are discussing, the objectives. So any investment is always directed towards earning of profit. पहले मेरी में बताया था. So any investment is always directed towards earning of profits या earning of return. हम इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम थोड़ा ज्यादा रिटर्न पा सके फ्यूचर में. So it is nothing but the maximization of return. For this purpose, we have two consideration, or we have to take the 2 concepts, that is the risk and return. Risk and return. Higher is the risk, higher will be the return. Lower is the risk, lower will be the return. जब हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा. रिस्क क्या है और कैसे ये सब साबित होता है कि हायर इज द रिस्क, हायर इज द रिटर्न, एंड लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रिटर्न. फिलहाल इतना जान लो कि हायर इज द रिस्क, higher will be the return, lower is the risk, lower will be the return. So any rational investor, before making the investment, should always choose that investment opportunity which will give him or her the maximum return. So returns are always the efforts made by the investor to earn some extra amount of money. So ये तो हो गया point number 1. Students, that's it for today's class. In next class we will discuss some more points of objectives of investment. Thank you.